So as we said, today is the day for question answers. We will try and see and delve deeper. Let's see what comes up. So there are a few questions that I have received and आप लोगों के भेजे हुए हैं और आपको याद भी होंगे. I have received questions from Abha, Parul, Shreyas, quite a few. Shreyas, you remember your question, Shivji? Yes, Didi, I remember. बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? It's like there's always this two sides, right? Good and bad, evil and God. So if you I'm interested in a lot in Puranas and Itihasas and all that. So everywhere, like in other religions like Christianity, Satan, it's not separate. But in Hinduism, like in our Sanatana Dharma, the evil also draws strength from the main thing. Like both God and evil, they both draw strength from one main source. So God obviously doesn't have any uh, this differentiation. It is very generous in giving, in showering whatever anybody asks for that matter. So at the same time, it gives strength and power to evil, but at the same time, after some time, the same source comes back and destroys that evil too. So I was like confused, like why does this happen? Is it like the source is trying to correct its own mistake, or like how is it relevant in the overall scheme of things? That was my question. Like, why allow evil to grow in the first place and then destroy it? Thanks. Nice. To the extent that I have tried delving into this entire process of who we are, and one distinction that I've always given is why psychology can never compete with spirituality and comes parallel to spirituality is psychology begins at the stage wherein it acknowledges that our mind is full of fear, greed, insecurity, comparison, competition, guilt, and all that. And so, what can we do to live a sanely life with such a mind? If, in fact, if you will look at Freud's work, he never claims that man can live a joyful life. He would say that the choice is about insane and less insane. So that is how psychology has always tried to deal with it. In fact, if you look at this entire structure of counseling and psychiatry, etc., they try to help you with catharsis. आप बोलो, शेयर करो, सब बाहर निकालो, और क्या डायरेक्शन आपको मिल रहा है, या फिर आपको काउंसलर डायरेक्शन देगा कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, which is like morality, that you do this and you don't do that. They never question the very basic fundamental structure of mind. But when you go to spirituality, and I've always loved quoting Kabir here. कबीर का एक दोहा है जिसने मुझे बहुत गहरे छुआ, और कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर. तो कबीर कह रहे हैं कि मन इतना निर्मल हो गया, इतना शुद्ध हो गया, इतना सहज हो गया कि उसकी तुलना वो गंगा के पानी से कर रहे हैं, क्योंकि गंगा को हमने हमेशा उसी रूप में
कहाँ है जाना है। और फिर कहते हैं कि इतना शुद्ध इतना निर्मल कि हरि ही पीछे पीछे कबीर को पुकारते घूम रहे हैं। अब कबीर को हरि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हरि स्वयं ही कबीर को ढूंढ रहे हैं। एंड आई हैव बीन इंट्रिग्ड कि ये कैसा मन है जिसके पीछे हरि घूमे। What would be the quality of this mind? And this exactly is what spirituality does. It transforms the quality of mind. It takes a step back. It doesn't move forward from where you are. It says, okay, let's step back and let's see what is the quality of my mind currently and why is it so, and how do I transform it so that it lives in love, freedom, and all that we talk of as Atman. And that is why spirituality always is a permanent solution, while anything else is not. Now, coming to your question, evil को मारना ही क्यों होता है, हम evil के साथ पैदा ही क्यों होते हैं? पैदा ही evil होता है, पैदा ही conditioning होती है. Do you recognize this? हम पैदा होते हैं तो हमारे पास physical conditioning वहीं पर होती है ना? We all know. अब आपने अगर बच्चे को बहुत ध्यान से देखा है तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, 2 दिन में घुरटना पुरटना तक शुरू कर देते हैं. कुछ बच्चे बड़े शांत होते हैं, कुछ बच्चे हाथ पैर ज्यादा मारते हैं, कुछ बच्चे रोते ज्यादा हैं, कुछ बच्चों का दिन रात ज्यादा उल्टा हुआ होता है, कुछ बच्चों का दिन बहुत जल्दी सेटल कर जाता है, etc. If you have noticed, where is it coming from? There is already conditioning inbuilt in them. Why you do not need to teach a child कि आग में हाथ मत डालो, एक गरम कप पकड़ा दो बस, and that's enough for them to know that okay, this is hot and hot is not okay for me. Where all this knowledge comes from? ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है? So if you look closely, that which takes birth itself is evil in certain way. What else is evil? That which takes birth itself is self-centered, selfish. That which takes birth itself knows कि भूख लगी है तो रोना ही पड़ेगा, बिना चीखे कुछ मिलता नहीं है. Nobody is going to pay attention to me until I cry. That which takes birth itself knows that how do I be center of attraction. 2 साल भी नहीं होते हैं बच्चों के, and they know कि कोई आया है घर में तो उसके सामने कैसे behave करना है ताकि सबके बीच का वो ही attraction बन जाए, आकर्षण बन जाए. Everybody should look at the child. The child demands attention कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. And then after, and because evil takes birth, there is a sense of competition. बच्चों में होता है. You only need to watch closely. There is a sense of competition. There is a sense of jealousy. All these traits you will find it very easily in them. Now in this process of growing up, हम जो social conditioning थोपते हैं, ideally हमें बच्चे को decondition करने के लिए कुछ करना ही होता है, लेकिन क्योंकि हम खुद इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, इतने चेतना में नहीं होते हैं, तो उनको हम डीकंडीशन करने की जगह हम उनके कंडीशनिंग के ऊपर और कंडीशनिंग्स की परत चढ़ा देते हैं. अब हम उनको गुड बॉय बैड बॉय सिखा देते हैं. अब हम उनको बता देते हैं कि दुनिया कितनी जालिम है और कितना कंपटीशन है और तुम्हें कितना निखरना है और तुम्हें कितना बोलना है, और कोई आता है तो उसके सामने इमेज कैसे बनाना है, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, एंड ऑल दिस. तुमने क्लास में बोला कि नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, नहीं बोलोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा, एंड दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, दिस इज हाउ यू शुड बी, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे बैठो, वैसे उठो. Instead of deconditioning the child of the conditioning that it takes birth with,
we give the child more of conditioning, which is what we call as social conditioning. अभी बच्चा के पास एक स्कोप था और ये एकदम गड़बड़ बात है कि बच्चा क्लीन स्लेट पैदा होता है। कोई बच्चा क्लीन स्लेट पैदा नहीं होता है। ये सब these are all crap stuff कि आप बच्चे को जैसे चाहेंगे वैसे ढाल लेंगे। आप बच्चे के साथ प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और उसका आपको प्रभाव भी दिखेगा, लेकिन बच्चा अपनी वृत्तियों के साथ आता है। The child comes with its tendencies, and if you are not conscious enough, यदि आप पे वो दृष्टि नहीं है कि आप वृत्तियों को समझ सके, पहचान सके, तो आप उसको डीकंडीशन नहीं कर पाओगे। और यही होता है, क्योंकि हमें वृत्तियों की जानकारी नहीं होती है, समझ नहीं होती है, तो हम उसको डीकंडीशन करने की जगह और कंडीशन थमा देते हैं। तो हमारा जो ईविल था अब ग्रेटर ईविल बन गया है। अब ईविल की कहानी ऐसी है कि उस बेचारे को भी सत्य का, एंड दिस इज व्हाट माय मास्टर ऑलवेज सेज, कि माया का तो दुख ऐसा है कि माया को भी सत्य ओढ़ करके आना पड़ता है, otherwise nobody is going to pay attention to it. False has to project itself as the truth, else nobody is going to listen to it. Who will listen to if you tell yourself कि मैं झूठ ही बोलता हूँ? शुरू में जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो विश्वास नहीं करेंगे, एक दो अनुभव हो जाएगा, उसके बाद हाँ ये तो झूठ ही बोलता है। Who is going to listen to you? Nobody will. So one, what takes birth is evil. Now why evil has to be slayed, why it has to die? In fact, this is a very beautiful thing that you pointed out कि सब कुछ तो उसी से आया है। You know, राबिया थी, सूफिज्म जो है ना, शुरुआत में that was full of fear. In certain way, सूफिज्म में प्रेम का जो आप देखते हैं पूरी अभिव्यक्ति, now it is full of love. इतने गीत हैं in love of him, so many songs. It is known to be actually added by राबिया, और राबिया और हसन ये दो व्यक्ति हैं जिनकी बड़ी कहानियां हैं। तो कहते हैं कि हसन जो है एक बार राबिया के कुरान के उनका जो प्रति था उसको देखते हैं, तो देखते हैं कि अरे राबिया ने तो बड़े सारे जगह पे कट कर रखा है, एंड ही इज फ्यूरियस बिकॉज आप कुरान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, इट्स अ होली बुक एंड यू मस्ट ट्रीट इट होली एंड ऑल दैट। एंड हसन सेज, राबिया ये क्या किया है तुमने? एंड राबिया सेज, and Rabia has, at every place she has cut all the spaces wherein there has been mention of Satan. जहां भी शैतान का उल्लेख है वो सब राबिया ने कट किया हुआ था। तो हसन प्रश्न करता है, तो राबिया कहती है कि यदि सब कुछ उसी से आया है तो ये शैतान और किससे आया है? और जब शैतान भी उसी से आया है तो मैं उससे प्रेम कैसे न करूं? So, yes, everything is his manifestation. It's just that if we forget, do we really remember? It is not about हम evil क्यों हैं? हम evil इसलिए हैं क्योंकि हमको याद ही नहीं है, हमारे अंदर कोई चेतना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि हम परमात्मा के ही हिस्सा हैं या हम परमात्मा ही हैं। हमको पता है क्या? हमको तभी ये पता है कि मैं ऋचा हूँ, ये पारुल है, ये प्रीति है, आप श्रेयस हैं, वो शिल्पा है। हमको तो सब अलग अलग मालूम है ना, इसमें इनफाइनाइट के लिए कहाँ स्थान है? यदि हमें पता हो भीतर से कि हम ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, हम उसके ही पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो बात आगे बढ़े ना। पर हमें तो ये पता ही नहीं होता ना, हमें तो पता होता है कि हमारे ये माता पिता है, हमें ये पता होता है कि हमने इस समय जन्म लिया। हमें कहाँ पता होता है कि भाई वो तो अजन्मा है, हम जिसके हैं तो हम भी तो अजन्मे हैं।
हमें तो डर लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें हर पल डर लगता है कि इस पे झुर्रियां आ जाएंगी। हम कितने सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं बचाने के लिए। हमें डर लगता है कि शरीर तो मर जाएगा, तो इसको कितना बचाएं, कैसे बचाएं, क्या क्या करें। हमें डर लगता है कि दूसरे हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए ना, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने बड़ी सुंदरता से कहा है, ये सेड जो मुक्त की तरह रहता है वो मुक्त है, और जो बंधन की तरह रहता है वो बंधन में है। बहुत सीधा सरल डेफिनेशन, वेरी सिंपल। जो मुक्त की तरह जीता है वही मुक्त है ना, और जो बंधन की तरह जीता है वो बंधन में है। तो हम बंधन की तरह जीते हैं तो हम बंधन में है ना। हमें पता ही कहाँ है कि मुक्त होना ही हमारा स्वभाव है, कि आनंद ही हमारा स्वभाव है। हम होते हैं क्या आनंद में? We are not in that joy all the time. We are always scared. We live in deep fear, insecurity. Do we show a single trait of Atman or source or God or whatever? We don't. And so we are evil. We are not evil because we have those. Source is whole. So it has everything. We choose to live by those aspects of it which we call as evil. So evil is not about being competitive, being insecure, being in fear, etc. Evil is about forgetting him only. This is my master statement. विस्मरण ही सबसे बड़ी भूल है. To forget him itself is the biggest sin. And that is what we live in. So when we live in that, that is what we experience. And what we experience is what we term as our reality. And so we superimpose that so that all gets again emphasized that this is how it is. And the journey continues. To break that journey, one will have to come from this deep acknowledgement that number one, हमको जो समाज ने जीवन की रूपरेखा दी है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, that life should be like this, that is not true. Life can be of any kind. It can be like that of Kabir, it can be like that of Osho, it can be like that of Gautam Buddha, it can be like anybody. The most well-known and wealthy person to the one who had nothing. Life can be anything. It is immaterial how life is. What is important is where from we operate, how we live. Do we live in deep remembrance that I am all right? Or do we live in remembrance that no, it is not okay, I need this, I need that, I need this, I need that. इतना तो होना चाहिए जीवन में, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए. तो जब हम ये तो होना चाहिए में जीते हैं ना, तो we choose evil. We do not say that maybe he is choosing me to come closer to him in this way. And so whatever you give me, I'm okay. I'm grateful for whatever you give me. And whatever you choose not to give me, I am even more grateful, क्योंकि अगर वो शायद मेरे पास आ जाता तो मैं आपसे और दूर हो जाता. You know, I am being reminded of the fulfillment of desire is his way of telling that he doesn't love us. Because if our desires get fulfilled, we only get distant from him.
we do not come closer to him. That is why. And finally, now this is the knowledge part that I'm saying, not really because I live in that right now, but definitely, finally, if we all have come from him, the final destiny is to experience him. And if at all you want to believe in destiny, Shreyas, just believe in this. We all are on our path to Buddhahood, and that is the only destiny. Rest everything is, आप रास्ते में जब जाते हैं कहीं तो बहुत कुछ होता है ना, आप उन बहुत कुछ पे यदि रुक करके समय लगाते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन से और दूर हो जाते हैं. तो जब आप उन बहुत कुछ पे ध्यान नहीं देते हैं और आप अपने डेस्टिनेशन पर ही फिक्सेटेड हैं, so you know that is the final destiny. Destiny is what? Destination is the destiny. And that is the final destiny. Anything else, I do not agree to. I don't settle down with. And so, finally, I merge with him. And because we all come from him, there is a part in us which will always cry if we do not merge in him. ये जो पूरी छटपटाहट होती है, हमें कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमें जॉयस नहीं लगता, इट इज ऑल एब्सेंस ऑफ हिम, नथिंग एल्स. या विद्या, darkness is only absence of light, and to dispel darkness you do not have to fight darkness, you just need to bring light inside and darkness goes away. Evil के पास इतनी सी भी औकात नहीं है कि वो सत्य के सामने खड़ा हो सके. हम एक कहानी पढ़ते थे बचपन में, और ये कहानी मैंने अपनी बेटी को बहुत सुनाई है. तो कहानी कहते, एक बार एक दादा अपनी पोती को कहानी सुना रहे हैं कि एक सफेद लोमड़ी है और एक काला लोमड़ी है, और सफेद लोमड़ी जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत गुडनेस है, बहुत ईमानदार है, छल कपट नहीं करता, एंड ऑल दोस थिंग्स. और जो काला लोमड़ी है वो बहुत शातिर है और सेल्फिश है और सारे उटपटांग हरकतें करता है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, जेलस है, उसमें बड़ा डर है, उसमें बहुत हेट्रेड है. और एक दिन ऐसा होता है कि इन दोनों वुल्फ की, इन दोनों लोमड़ियों में लड़ाई छिड़ जाती है. एंड द चाइल्ड आस्क, अच्छा जीतता कौन है? एंड द ग्रैंडफादर रिप्लाइड, वो जिसका तुम साथ देती हो. इट इज एज सिंपल. आप किसके साथ खड़े हैं? मास्टर सेज, लड़ाई तो चल ही रही है ना, यहाँ तो हमेशा खिटपिट चल ही रही होती है, कहाँ शांति होती है? यू आर नेवर एट पीस, यू आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट. तो जब लड़ाई ही करनी है ना तो कृष्ण की तरफ से खड़े होकर के करो ना, उल्टी पार्टी में क्यों खड़े हो जाते हो? इतना तो चूज करना आना चाहिए. और अभी यहाँ तो हम जरूर खड़े हैं कि इसमें से एक हम चयन करें. तो दैट इज व्हाई आई हैड बीन सेइंग दैट अभी हम जिस तल पर हैं, चॉइस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अभी हम चॉइस से चॉइसलेसनेस में गए नहीं हैं. तो यूज योर विवेक बुद्धि, पूरी तरीके से लगा दीजिए. यूज योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन and know where are you willing to stand. ठीक है? So if that helps you, anything else in addition to that, Shreya? Yeah, that's a very nice explanation, Didi. Like you said, in Kunti Gita,
Kunti, she says she prays to Krishna to never, keep her happy. She always says, "Keep giving me troubles, keep giving me problems, so that I always remember you." So I guess the nature of the mind itself, be it a bhakta or an evil person, I think it is to forget. So only when problems come, I think they think about. It is mind when it is very pure, this mind itself gets surrendered and all that remains is Atman. And this mind, more impure, ego. So when she's asking about giving me trouble, she's asking that help me keep remembering that I am not even the speck of dust. I have no power. And it is only because of you that I can be joyous. And allow me to stay surrendered and in bhakti. Because the moment this mind gets things, no, it starts to inflate. That, oh, I have done it. मैंने achieve किया. कितने motivation theories है ना? Power and people have power motive, people have relationship motive, people have achievement motive and all that. Where is it coming from? It is coming from the very fact of the recognition of the very fact that mind is like this, to use it. That's how. Yeah. Thank you. What more questions do we have? Parul? मेरा सवाल था कि एक तो माया क्या है एग्जैक्टली एंड दूसरा Let sorry? me stop the recording and restart so that I don't have to cut the one.